Good morning, everyone. Today we will study a new physical quantity, distance. Okay, and I can say another version of distance is displacement. There is a very much little difference between distance and displacement. Sorry. So we will study here about distance and displacement. Okay, distance and displacement. Okay, so we will understand this with the help of example. First, what is it? Okay, then we will study the main definition, and then we will differentiate distance and displacement. Suppose this is your home. Okay, this is your home. Okay, and you are presently standing here under a tree on the bicycle. Okay, and you want to go here. Ultimately you want to go at this place. Okay, suppose your friend is waiting for you at this place and you want to meet your friend. Okay, so you can see that if you want to reach at C, what is the choice you have? You have two choices. One is you can go A, B. Okay, the first choice where you will take a actual path, you will go from A to B and you will go B to C. This is called distance. Distance is the actual path traversed by the object between two points. ए से सी पे पहुंचने में जो आप पाथ ट्रेवल कर रहे हो एक्चुअली में वो एक डिस्टेंस है, यानी लॉन्गेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं इसे हम. सेकंड ऑप्शन यू हैव ए टू सी and this is the shortest path between A and C. So this is called displacement. Okay, understood? I can say that AB plus BC is the distance. Okay, and AC is displacement. Okay, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, बिटवीन टू पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल. और डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ. अगर हम क्वांटिटीज में देखें तो व्हेन एवर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हम डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे. यानी कि मीन्स टू से इफ यू हैव सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेट करोगे, सो इफ द समवन इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो यू हैव टू गिव नेगेटिव साइन टू इट. ओके, अंडरस्टूड? सो बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको डायरेक्शंस में पॉजिटिव नेगेटिव असाइन करना पड़ेगा इफ दे आर जस्ट अपोजिट. If they are going in the same direction, so positive ही होगा, but अगर रिवर्स आ रहा है तो नेगेटिव देना पड़ेगा, just opposite केस में. Whereas in displacement we will just, whereas in case of distance, okay, if you will see distance, so in the distance we will just add. We always add. Suppose 2 meter is going in this direction, and then suppose 1 meter, and then again 1 meter. So you will just add 2 plus 1 plus 1, 4. So answer will be 4. So in the distance we will simply add. Okay. So in the displacement we will take care of the directions. We will assign positive and negative sign to it. In case of distance we will simply add all time. All time we will simply add the numbers. Okay. So we can say that in the displacement we are taking care of the sign. So it is a vector quantity because we are here paying attention to the directions. So displacement is a vector quantity. Or suppose, for example,
if you are going in this direction 4 meter and then you have traveled 1 meter back, okay, so if you see from A, this is your B point and this is your C point, okay. Now see, if you have traveled 4 and then you are going back, so in this sign you will apply minus sign, because if you are taking this one positive, so you will apply minus sign here. So 4 minus 1 is 3. So you have traveled 3, because here you have to take signs and you have your displacement will be 3 meter, whereas your distance will be 5. You have to simply add 4 and 5, okay. Now suppose you have points A, B and C, and this is suppose your 1 to 50 and this is 100. Okay students, suppose you have traveled from A to C and then again back, and you have somewhere here D. Okay, suppose let's say it's 20. Now my question is, what is the displacement? Okay, what is the displacement? So displacement is shortest path between initial and final point. So your displacement will be 20. So displacement is the shortest path between initial and final position. This is your final position, this is your initial position, so it's a shortest path, okay. Whereas distances you have to add. आपने 100 ऐसे चला, फिर आप यहाँ पे वापस गए, तो ये आपका आपने कितना, यहाँ से 50 हुआ, फिर 20 यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि यहाँ से 20 है, दिस इज 30, तो कितना हो गया 100, 50 और 30, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 180. सो डिस्टेंस 180 है, वेयर डिस्प्लेसमेंट क्या है 20. तो डिस्प्लेसमेंट में हमें ये ध्यान देना होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है उसके बीच की डिस्टेंस, ओके. एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस में वी हैव टू ऑलवेज ऐड, हमें क्या होता है सिंपली ऐड करना होता है, ठीक है. डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट से पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है. दोनों की एसआई यूनिट मीटर ही होती है, बिकॉज आप एक लेंथ ही मेजर कर रहे हो. If we will distinguish it, so the first point is that distance is the length of the path traveled by a body while moving from initial position to final position. हमने कितना path travel किया, उसकी जो length होगी वो हमारी distance है. Whereas displacement is the shortest distance between initial and final position. मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये क्या है, shortest. ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, A to C, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ओके. वेयरएज डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, ओके. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके. डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी होगी, ठीक है, 0 भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, ओके. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम, मतलब सिंपली हमें सम करना है और इसमें हमें प्लस माइनस वेक्टर्स के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा. वेक्टर का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन के साथ डील करना पड़ेगा. देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एवर देयर इज अ मोशन. डिस्प्लेसमेंट हमेशा कुछ ना कुछ, डिस्टेंस आपकी हमेशा कुछ ना कुछ आएगी और डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 भी हो सकती है, हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है. और यूनिट दोनों की मीटर होती है. तो ये बेसिक है, इसे आप नोट डाउन करेंगे. इसके हम क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है बुक पे. तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी इस कंसेप्ट की. अभी सिंपली हम इसका बेसिक कंसेप्चुअल आइडिया आपको लिखना है, ठीक है. तो आप एक दो वो फिगर बनाएंगे जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप ये टेबल बनाएंगे, ओके. थैंक यू.